Okay. Hi everyone. So welcome to Learn for Exam, and this is a live session. And right now with me is Manju Tripathi, ma'am from GIM. And अगर उनका आपको experience बताऊं, so she has over 19 years of industrial experience across corporate treasury, finance, and banking. And the organizations and her level of associations are senior vice president and sector head sales at cash management with HSBC India and deputy general manager treasury with Jet Airways and the manager in corporate finance with Tata Motors and executive assistant to director finance with Indian Petrochemicals Corporation, now part of Reliance Industries. And moreover, she was the faculty of Galgutia's Business School, Greater Noida, teaching banking, corporate finance, cost management, accounting, and international finance. Currently, she is with GI as a faculty. Welcome, ma'am, to this session. Thank एंड you. थैंक यू सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की डेट में अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स को देखें तो अगर मैं निफ्टी की भी बात करता हूँ तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल पार्ट है वो भी बहुत ग्रो कर रहा है सो डेफिनेटली बैंकिंग जो है आने वाले सालों में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है उसके लिए जीआईएम ने एक कोर्स निकाला है बैंकिंग वाला ठीक है एमबीए लाइक पीजीडीएम इन बैंकिंग सो वो कोर्स में ऐसा क्या है कि जो अलग करता है जो कोर नहीं करनी चाहिए और बैंकिंग करनी चाहिए तो उसमें क्या चीजें डिफरेंट होती हैं व्हाट इज ऑल अबाउट द कोर्स Look, it's very different from the general PGDM. What happens in case of general PGP course is like students are not very sure they whether they when you join you're not very sure you have fairly good idea okay you may be wanting to do finance or marketing or HR or operations. So the course is general, like you cover almost all the aspects of in the first year. And in the second year, then by the end of the first year, people have a fairly good idea they want to specialize in which area. So then certain finance specialization courses like banking, security analysis, fixed income derivatives, all these get covered as an elective course in the yeah PGDM general management. Similarly, for marketing, there'll be consumer marketing, neuromarketing, things like that. I mean, individual special courses. So by the time 1 year is already gone, you are left with so much to cover in a specialized course. But BIF is how it is different. It caters specifically. The moment you join BIFS, you know that you don't have an option of getting into general marketing. It's not that marketing is ruled out. It's a marketing of financial products. You will still study marketing. You will still study HR, but with a focus on the financial services sector. Correct? So, for instance, I will be just as I gave you an example that fixed income derivatives, that course gets taken in the PGDMs as a specialization elective course. Whereas in the case of PIFS, this is a core course. Then again, banking as an elective is being taught in this. So a 30 session or 24 session in banking doesn't give you so much of idea. Here you are being taught it as a core subject. So for second term you study banking, third term you study banking, which covers a larger corporate banking. If you look at it's a corporate banking, consumer banking. So like first you get an overall idea of commercial banking. Then in the third term I'll be teaching like corporate banking. Then it will be open in the elective course as consumer banking, wealth management, and all these subjects get offered as a elective. And how many electives can you take? Even if you're finance specialization, you are expected to cover some marketing and some HR. It's not that you can take all financial, major finance, but some marketing. Here it is all finance. Secondly, the major differentiation factor is uh, focus on technology. Sector currently we all know is technology driven. It's a huge change from when you are going into the bank depositing money, or if you have to withdraw, you go to the bank and write a withdrawal slip, stand in the line, get the cash, come back. From there, it went to the card, ATM, automated teller machine. Then we have moved. Now we have a UPI, Unified Payment Interface, which gives you technology revenue. You can transfer. Earlier, there were banking hours, 11 to 2, right?
Now there are no more banking hours as defined. If I want to transfer money to you, I can do it in the middle of the night at 2 o'clock in the night. And if I'm connected, if I've done the transaction with you earlier, I can immediately transfer the money if you are in need urgency. So technology plays a very important role. And that's the reason in this course we have brought in these technology courses, Python, our other, data visualization. All that courses are as a part of core and not as a part of elective. In PGDM, I don't think it gets offered. I don't think I know it doesn't get offered. Python as a course doesn't get offered. Here you will be taking one core subject as Python. So these are the thing, very differentiating factor. But fact is, you have to be very clear when you are entering that your stream will be finance. Okay. So it'll be financial sector. It may be investment banking, it may be banking, it may be insurance, it may be NBFC, it may be, jobs are galore, no doubt about it, but restricted. If you are a BIFS, you rarely will be taken up by an HUL or consumer as a marketing consumer person. That's what I'm trying to bring about. Okay. So just one query मैम जो कि सब पूछते हैं, very simple one. If मेरे माइंड मतलब एज अ ग्रेजुएटेड पर्सन के माइंड में जो फ्रेशर होता है उसके माइंड में आता है अगर मैंने ये बैंकिंग वाला किया तो मुझे 9 से 5 वाली जॉब करनी पड़ेगी. इज इट ट्रू? 9 से 5 की जॉब कौन नहीं करता है? किसके पापा ने नहीं किया है? मम्मी ने नहीं, नहीं वो किया? उनको लगता है कि बैंक में बैठ के वो एसबीआई के उस पे बैठ के वहां पे 8 नंबर काउंटर बैठ के मेरे को पर्चियां काटनी होंगी लाइक दैट, या कैशियर बन जाऊंगा. तो स्टूडेंट्स टेंड टू बिलीव दैट थिंग कि ऐसा होता है. Cashier is not a good job. तो गुड जॉब बट एमबी के बाद नहीं करना चाहते ना लोग. Cashier is doing and cashier draws handsome salary. But why are you looking only at cashier? आप कैशियर ही क्यों देख रहे हो? आप फ्रंट लाइन मैनेजर हो सकते हो, आप जाके लोगों से बात कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो, उनकी वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हो, वो सब. आप रिस्क, अगर आपका मैथमेटिकल स्ट्रांग है, लॉजिक स्ट्रांग है, तो आप रिस्क एनालिसिस में जो सी ये जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, इसके 3 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं. पहला तो क्लाइंट फेसिंग. आप कॉर्पोरेट बैंकर हो सकते हो. आप कॉर्पोरेट बैंकर हो तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स को जाके इंटरेक्ट करोगे, यू विल गेट द बिजनेस. देन यू विल ट्रांसफर दिस द बिजनेस, वेदर द बिजनेस जो बिजनेस उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो रिस्क वाला डिसाइड करता है. आपको लगेगा इनको 100 करोड़ का लोन दे दो, पर वो पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसके लिए आप रिस्क में जाते हो, इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, एनालिटिकली, देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीम. तो आप रिस्क इवेल्युएट करते हो. तो अगर एज अ कॉर्पोरेट बैंकर आई कम बैक एंड से नहीं, XYZ फर्म को 100 करोड़ बहुत अच्छा है, उन लोग दे देंगे ये वो, तो हम बोलेंगे हमको 10 साल का डेटा ला के दो, हमको प्रायर परफॉर्मेंस दो, फ्यूचर उनका क्या प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट का पूरा हम बैकग्राउंड चेक करेंगे एज अ रिस्क. That is called mid office job. See, front office, mid office, and back office. So, front office is the office which goes into dealing with the clients. तो client facing होता है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको खुद की भी नॉलेज होनी चाहिए. आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो, like for instance, I got my first big setback when I went to one of the clients. एंड मैंने कहा हाँ हाँ फैक्टरिंग सर्विस हम लोग करते हैं, और मुझे नहीं पता था बिकॉज आई वाज इन कैश मैनेजमेंट एंड आई डिड नॉट नो कि फैक्टरिंग सर्विस ट्रेड वाले इनको मना कर चुके हैं क्योंकि उनकी रिस्क कैपेबिलिटी एनालिसिस में नहीं आया है. सो आई पुट द कॉर्पोरेट बैंकर इन द सूप कि हम फैक्टरिंग सर्विसेज दे सकते हैं. तो ये फॉपा तुम तभी अवॉइड कर पाओगे इफ यू आर इन सिंक. ठीक है. तो मैं अभी तुरंत तुरंत नए नए बैंकिंग में गई थी. फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड यू हैव अ हैबिट ऑफ डिमांडिंग एवरीथिंग. तो वो लोगों को फैक्टरिंग सर्विस चाहिए थी, और मुझे लगा व्हाट्स रॉन्ग इन दैट इफ आई एम डूइंग क्रेडिट बिजनेस. लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, मैं कैश मैनेजमेंट कर रही हूँ, वो हम दे सकते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं दे सकते हैं. ट्रेड वाले में उनकी प्रॉब्लम है, उनकी ये क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट हाई. So these kinds of FOPA will be avoided if you have some knowledge. So the moment I came out, Pankaj told me, "Ma'am, Manju, क्या करते हो? पूछना तो चाहिए." मैंने कहा, I realized immediately, I'm sorry, but that's how we do. We learn. So then the last is
somebody has to maintain the records. So that is a back office operation. It's not that it's a bad job or a good job. There also one has a right to question कि भाई आपने ये ट्रांजैक्शन कर लिया. बहुत सारे ट्रांजैक्शन फ्रंट ऑफिस के बैक ऑफिस वाले पकड़ते हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं. Okay. फ्रंट ऑफिस में फ्रॉड्स होते जा रहे हैं फ्रॉड्स. एज अ बैक ऑफिस पर्सन ऑल्सो यू कैन चेक. लाइक अभी रिसेंटली जो एक पोस्ट राउंड कर रहा है कि that lady was just a person, the Singapore, they got them to transfer some $180,000 Singapore Sing dollar, saying that you are a part of the team which is checking the fraudulent activities and we want to, so it is a fake transfer that will take place. And the lady who identified and stopped the transfer was the one just managing the transfers, right? The back office person. पर उसको कुछ गड़बड़ लगी कि बॉस, how all of a sudden $180,000, this man is an Indian origin man, of course in Singapore, but in Indian origin man, and he is doing personal and this financial, but transferring the money to Hong Kong account. So she stopped the transfer, and that man got saved. 185,000 or 180,000 Sing dollar were saved because she informed the police that there is some suspicious transaction happening. और वो पर्सन को इतने कन्विंस था कि नहीं, मैं गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा हूँ, सिंगापुर गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा हूँ बाय allowing my, this is like a fake thing, like for instance you say कि ये चारा डाल रहे हैं उसको पकड़ने के लिए. Okay. So every job is important, and there you require more patience. So your behavior, what kind of a person you are. Not everyone is fit for a marketing or frontline job. Similarly, not everyone is fit for risk management job. At the same time, not everyone is fit for operations job. That requires different kind of a setup. Then there will be a product integration. You develop product according to the client requirement. So that's another vertical. वो हर के में होता है. कैश में भी हमारा प्रोडक्ट का होता था. प्रोडक्ट हम आके बोलते भाई हम क्या क्लाइंट ये मांग रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं. Then in the same team there will be someone who will be integrating. So the platform of client has to talk to my platform. So lots of things are there, and every job is important. It's a misnomer thinking कि कैशियर का जॉब क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है. और 9 से 5 बॉस आस्क मी, 9 से 5 तो भूल ही जाओ. 9:15 बजे घर पहुंच छोड़ती थी तो 10 बजे रात को, 10:30 बजे रात को, 12 बजे रात को घर पहुंचाए. So the concept, how much of it all depends on the requirement, on your passion, on your what you want to do. 9 से 5 जैसा कोई चीज अब रहा नहीं है. It's 24/7. It's virtually 24/7. For me, it was virtually because I was handling overseas accounts. So US starts after 6 o'clock. If I have to talk to somebody in Hong Kong to decide on something, I will have to talk in a different time zone. If I have to interact with someone in US, I have to talk in a different time zone, and I have to manage my things. I have to learn how to manage my things. That was in HSBC. Of course, in Tata Motors and Jet Airways, everything was 9 to 5. But did you ever leave the office 5? I am not in my dreams. I have never left any office, except for IPCL initially. But then afterwards, even after 1 year in IPCL, I was as a management trainee. I think after a couple of years, when I started performing very well, I was taken in as an executive assistant to director finance. So then there was no this thing. I remember there was in Vadodara that there was some match happening, international match happening, which is Vadodara. This ground was just next to ours because IPC had built the ground, the cricket ground, and I was working from 9 till 9 doing the cost audit. So I told my director finance, आप सबको पास दे रहे हो जाने को, मुझे तो अभी नहीं मिल रहा है. तो बोले जाओ, किसने मिला दिया? मैंने कहा कैसे चली जाऊं. So it's, you have to sacrifice things. It's your priority, what you want. Okay. So मैम, आपने HSBC इन सब कंपनीज में काम किया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा सारे लीडर से रहता है
टेंथ में कितने थे, ट्वेल्थ में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, एंड हाउ यू मैनेज टू स्टेप अ लैडर, लाइक आपने एक एक करके ही सब चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, तो आप ये HSBC तक कहाँ तक ऐसे कैसे पहुंच गए, हाउ? For me, education was always very important. ओके. Okay. So, UP board, ओके. all right, 1980s, 79. And उस समय जब रिजल्ट, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी. ओ. I came from a very humble background. I come from a very humble background rather. So हमारा घर के पास एक स्कूल था जिसमें पढ़े थे. And मैंने सेकेंड और थर्ड, उस समय रिजल्ट जो होते थे वो उसमें आते थे पेपर में प्रिंट होके, रोल नंबर्स. और फर्स्ट क्लास जो होता था ना, वो इतना सा कॉलम होता था, मतलब मैक्सिमम अक्रॉस यूपी यू विल फाइंड not more than 90 or 100 students scoring first class. Okay, that is why nowadays I see boss पहले तो 60% आ जाए, मतलब कि बाप रे. And I scored 72% with distinction in 3 subjects: maths, uh, English, and biology. Something like biology. 86% in biology out of 100, 89 in maths out of 100, and English again, because distinction means you have to score above 80%. And still, the other 2 subjects, science and Hindi, dragged me so much that my score was 72%. But there onwards, I got National Merit Scholarship, so I could join Central Hindu School. Then in English medium school, there my struggle again starts. So, and in UP board, even in ninth, you had to choose your stream, like not in CBSE or ICSE. वहाँ पे तुमको आर्ट्स और साइंस का, मेरे 5 सब्जेक्ट ही होते थे, साइंस, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी. ओके. तो उसमें but from there I had to study in Hindi English medium of instruction. So my obviously it had to impact somewhere. So my score went down because I spent most time. My mom told me, if you want to learn English and try to speak English well, try and read as many novels as you want, as you can. And I wasn't binging novels even during my exams. So my score was pathetic, 58%. And then again in BHU, it was a physics honors course. So it was 65%, which was good because their honors course, there were only 5 students, and even the topper scored only 72%. So 65% was very good for me. There are reasons I can talk about, like lots of things. But yes, there was a challenge. My main thing was I wanted to, my focus shifted from studies to building my personality. So I kept on reading. I've read so many classics, so many things. I mean, I went into reading novels, and because my mom said कि if you read novels, it is easier to grasp things. क्योंकि उसमें आपको ऐसे लगता है आप उसको होल्ड कर सकते हो. टेक्स्ट बुक में अगर आप इंग्लिश से पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. तो एक हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी और एक नॉवेल मेरे पास पढ़ी होती थी. So that's it, percentage wise, but still I think I did pretty well given the struggles I had from English medium to Hindi medium. And then from wo usme even I scored 58% was better because half the course was already done in 10th. हम लोगों का यूपी बोर्ड का इतना वास्ट कोर्स था कि वो मुझे थोड़ा खाली उसके नॉमेनक्लेचर और ये सब इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश करना पड़ा. So the question, see, it's very glamorous to say that percentage don't matter, but it does. अगर मेरे 65% नहीं आए होते, मतलब 65.8, शायद मेरे को भगवान ने वो दे दिया, नहीं तो मुझे IIT दिल्ली में नहीं मिलता. Because IIT Delhi ka entrance first scrutiny is graduation has to be 65%. Oh. So I just was on threshold. So research के लिए जब मैंने वहाँ पे entry ली तो IIT Delhi, so it's good to say that scores don't matter, but unfortunately or fortunately our evaluation system is based on score.
True, ma'am. सो ये जो सब लोग देखो, अगर बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो कहते हैं स्कोर नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये है वो है। थ्री इडियट्स बोलता है कि अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है। When I was talking, I was very impressed with the three idiot, and I was talking to a friend of mine who was teaching in Boston School in Bombay. When I was in Bombay, HSBC, I think HSBC or some, I don't remember. तो रेशमी ने बोला ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है, पर कितने तेंदुलकर और विश्वनाथ आनंद और वो बन सकते हैं, विराट कोहली, और फॉर दैट मैटर साइना साइना मिर्जा एंड साइना नेहवाल। समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन, और हमारा सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं है। सी, बहुत सारे लोगों को बैकिंग नहीं होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो पढ़ना तो जरूरी होता है, पर पढ़ो कैसे इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी। तो इट्स नॉट दैट यू नीड टू बिकम अ बुकवर्म, दैट डजंट हेल्प। पूरे टाइम टेंशन में नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना, वो भी नहीं है करता है, लेकिन हमको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है चीजों को। और currently the problem is too much of technology, too much of information flow, too much of gadgets. People are spending. During our time, our studies were very I mean, अगर मैं स्कूल से कॉलेज से वापस आई तो मुझे पता है कि मुझे 2 घंटे खेलने हैं, उसके बाद मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद मुझे सोना है। बड़ा सेट पैटर्न होता है। अभी आजकल बच्चों का कोई पैटर्न नहीं होता है। गो होम, आई सी माय नीस नेवर हैड एनी पैटर्न। उसको जब मन होता है सोती है, जब मन होता है जगती है, जब मन होता है वो करती है, जब देखो तब वो मोबाइल पे लगी रहती है। तो इट्स लाइक थिंग्स आर चेंजिंग। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद द थिंग इज, उसमें क्या है कि हाउ स्ट्रांग यू आर mentally makes a difference. You have to know what you want, you have to follow it passionately with commitment, and there is no shortcut. There is no shortcut to hard work. हार्ड वर्क पेज। हमें कभी कभी लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमें नहीं मिला, तो कभी कभी भगवान सिग्नल देते हैं, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड। वी ऑल से हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आई से कॉन्फिडेंस विल कम इफ यू नो योर सब्जेक्ट वेल। अगर आपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, पर हमको पता है कि हमें जो क्वेश्चन है वो हम आंसर कर सकते हैं, तो दैट्स इट। सो दिस वाज एजुकेशन। नाउ यू से स्टेपिंग अप द लैडर, राइट? Honestly, I think it is something to do with the first job was Gujarat Steel Tubes immediately after my BK School of Management. I mean, I did my MBA from BK School of Business Management in Ahmedabad, and that time there were only two schools only management education. एक तो IIM अहमदाबाद था और एक BK था। और BK में मेरे प्रॉफ बोलते थे यू आर बेटर बिकॉज थाउजेंड्स में तुम 30 ही सिलेक्ट होके आए हो, or across I mean, across India, only 30 of you have been selected. And a group of 30 is being taught is much better. Individual attention मिलता है। तो हमारे बैचमेट्स तो सबने बहुत प्रोग्रेस किया, but the same school now is like, because there are a lot of competition, your entry, everything, so things have changed. So I think comparing my education, my style to this current education, current style is very different. Now it's a very competitive world. अभी मैं 98.01 और 98.02 में डिफरेंस देखती हूँ। Yeah, there are 10 people in that. तो और पहले ऐसा नहीं था, एक 98 है तो दूसरा भी रेस्ट एश्योर्ड 97 और 96 ही होगा। ऐसा नहीं होता था कि 98.01 और 98.02 और 0.1। It's crazy these days, the pattern. I have my views on the system, education system, but it is there. So IPCL happened immediately after 6 months from Gujarat Steel Tubes because I appeared for exam. वो उसमें
it was in public sector, no, Navratna public sector at that time. तो उसमें रिटर्न होता था दिस ये कंपटीशन, Interview. no, discussion, group discussion, then interview. All three steps were there. So I got selected, and fortunately for me, I learned the maximum. 10 years in IPCL Baroda, I learned the maximum because I was attached with the director of finance, और मैंने सारे project related, सारे forex related बहुत सारा learn किया, बहुत सारा काम किया. काम भी उतना किया, लेकिन learning भी उतनी हुई. But then when I thought that in 2001, when I thought that now this is going to get disinvested, and since I was part of the disinvestment team, I had a fair idea that Reliance is going to bid for it and they will get it, and I didn't want to work there personally. So I switched and I went to Tata Motors. And then from there, I think 2.5, 2 year 9 months in Tata Motors to Jet Airways, because in Tata Motors I did not get what I felt was the right, my right. Because when I moved from public sector to private sector, people told me that oh, public sector is not being given so much of weightage and all. पर मुझे ऐसे लगता है कि private sector से public sector वाले ज़्यादा intelligent थे, क्योंकि उनका screening और वो सब ज़्यादा होता था. तो जब मैंने वो पोजीशन डेप्यूटी मैनेजर की एक्सेप्ट कर ली, फिर मुझे लगा कि मैंने अपने आप को अंडरसेल किया है. तो मैंने फिर उसके बाद जेट में एज अ डीजीएम ट्रेजरी मिल गया, वहां गई. Things did not gel, so I quit and I was home for 6 months, and then I got HSBC. Okay. Things happened. Then HSBC, 2009 was a crisis time, so they contemplated. So senior level people, they don't sack, but they make your life difficult. So I realized that the aim is a reduction in forces, and I personally feel my idea is very clear. If I don't enjoy doing something, I will not do. फिर तुम अपना उसमें हार्ट और सोल नहीं डालोगे तो तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे. जो भी करो वो पूरे पैशन से करो या तो मत करो. दैट्स माय मोटो. So I quit, and then when I quit, I had two very senior position things with Stancy and one more organization. It didn't work out. So sometimes you have to leave things too. So one after the other. But then I thought the next best is, the glamorous answer is कि I wanted to give back to society what society gave me by educating students. But right answer is yes, this was the next best option, because the openings at that point of time in the depression time was difficult to come through. So, but then again, I only say, जो भी करो उसमें अपना बेस्ट लो, और जो हो गया उसको पास्ट में. फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, बट डोंट स्टिक टू पास्ट. Alan Watts, the author, has given a very nice quote. Quote in the sense, he has quoted an anecdote which I really like to share. जब एक बिल्ली जो पेड़ पे से गिरती है ना, चढ़ जाती है, कभी कभी वो गिरने लगती है, तो वो अपने आप को एकदम खुला छोड़ देती है, एकदम रिलैक्स हो जाती है, तो बहुत सॉफ्टली वो लैंड कर लेती है और उसको कोई चोट नहीं लगती है. पर गिरते समय अगर उसको सडनली लगेगा मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, और वो स्टिफ हो जाती है और टेंशन में हो जाती होती, तो वो अगर जमीन पे गिरेगी तो उसके हाथ पांव, ऑल, शी विल बी अ बैग ऑफ ब्रोकन बोन्स. Similarly, for human being, we are always pushed. आप हर समय ऐसे लगेगा. Like one of my friends used to say, when I feel it's the worst that is there, then I see another worse happening. You are always pushed to the brink, and you're always falling. तो तुम अपने आप को क्रॉनिक टेंशन में रखते हो या अपने को लेट लूज करते हो. तुम पुरानी चीजों को पकड़ के उसको क्लिंग करके उससे पे चिपके रहना चाहते हो, या हो गया, अगर मैं ये चिपकी रहना चाहती, ओ मुझे इतनी सारी सैलरी मिलती थी, मुझे इतना सारा पावर था, अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती. At 45, I would not have sat with people half my age and studied
financial management, advanced financial management and international finance in IIT Delhi, because 6 महीने हमको पढ़ना सेम होता है रिसर्च में। तो वो सब मतलब कभी भी पास्ट को लेके मत चिपको, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड लेट योरसेल्फ फ्लो विद द थिंग्स। तो और टेंशन करके इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। आपने खत्म कर लिया, आपसे कोई गलती हो गई, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, ऐसा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। लेकिन उस मिस्टेक से आप उसको चिपके रहे, आप उसको सोचते रहे आए मैंने ऐसे क्यों किया, तो आपने उसके 4 दिन अपने और बर्बाद कर दिए। हो गई, ठीक है, ये क्यों हुई, अगली बार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका दूसरा रास्ता क्या है? फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एंड मूव ऑन। And sometimes God gives you signal. Like for instance, till 12th class, I wanted to become a doctor, and I appeared 3 times for the common entrance test, and all the 3 times I just could not make it. I mean, it was by whiskers I could not make it. So that was not for me, probably. ओके, जस्ट वन एडवाइस फॉर दी 20s एंड 30s जो हमें देख रहे हैं, वो ज्यादातर यही है कि 20s to 30s के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? 20 to 13, I did not understand. 20 to 30s जो एज ग्रुप है, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मेजरली वो ऐसा एज ग्रुप है आज की डेट में जो पैसे के लिए भाग रहा है, हु इज रनिंग आफ्टर मनी, जस्ट उनको बस पैसे चाहिए कि आते No ही harm. सबसे पहले जब जॉब मिले तो सबसे पहले आईफोन No हो, लाइक harm. दैट। No harm. मेरी जिंदगी में भी मैं बीएससी फिजिक्स किया तो उसके बाद मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे पहले पैसे कमाने हैं, एस्ट्रोनॉट बाद में मैं भले ही बन जाऊंगी, जो कभी नहीं बन पाई। लेकिन देयर इज नो हार्म, मनी इज द मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। पर उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो? मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मनी के पीछे मत भागो, मैं भागी हूँ। I've changed jobs for money. I've changed jobs for power. We all do that. It's a Maslow's hierarchy. When you are at the bottom of this thing, मैं ये कभी नहीं बोलती कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अपने से आता आएगा, ये सब मैं नहीं मानती। मुझे जॉब चाहिए थी तो मैंने कहा बीएससी करूंगी, एमएससी करूंगी, पापा सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिसर्च हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एमबीए इज द वे। तो पूरा मैंने मेहनत उसमें लगाया, एंड 2 साल के बाद जॉब मिली, और जॉब मैंने 4 चेंज की। सो इट्स, आई डोंट सी एनी हार्म इन रनिंग आफ्टर द मनी, बट रनिंग आफ्टर द मनी द राइट वे, नॉट द रॉन्ग वे। अब मनी के लिए आप ड्रग्स मत सेल करने लगो, मनी के लिए आप चोरी मत करने लगो, मनी के लिए आप अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मत कॉम्प्रोमाइज करो। आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड माय, and I'm very proud that I've never compromised. Whenever there is a point of compromise, I just quit. Then money is not important. A good human being, और अगर मैं इतना जानती हूं कि अगर मैंने बहुत सारी मेहनत की है और बहुत सारा कुछ किया है, तो वो मुझे भगवान देंगे, कहीं ना कहीं से मिलेगा। सी इट्स वेरी, आई ऑल्सो फील कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती तो मुझे HSBC पहुंचने में जितने साल लगे शायद ना लगते। मैं बहुत अर्ली, मेरा IIMs में हो जाता, क्योंकि मेरे 98 परसेंटाइल आते थे मैथ्स में, मगर 43 एंड 44 परसेंटाइल आते थे इंग्लिश में, द लैंग्वेज पोर्शन में, जो मुझे इतना कर लेता था कि मैं फिर वो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाई IIMs में, द 3 IIMs दैट एट दैट टाइम। सो आई न्यू मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी और लॉजिक्स में बहुत अच्छी थी, तो 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, बट व्हाट वाज ड्रॉपिंग मी वाज 43 परसेंटाइल, 44 परसेंटाइल इन द लैंग्वेज एंड अदर सेक्शन। इंग्लिश, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, शायद मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती तो मैं कहीं की कहीं होती, लेकिन उसके लिए रोना क्यों? ट्रू, राइट? हमारे पास जो है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट करो। सो आपने स्टार्टिंग से बोला इंग्लिश मीडियम नहीं थी, हिंदी मीडियम थी, तो आपने जब जॉब करी होगी डेफिनेटली वहां पे वो इंग्लिश बोलते ही होंगे, By उसको that आपने time, कैसे I टैकल? was very prepared for English.
Now I find it difficult to speak in Hindi. My God. By that time I was, मैंने अपना ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज कर लिया अननोइंगली. भगवान ने मुझे 65.8% दे दिया जिससे कि मुझे आईआईटी दिल्ली में, नहीं तो मुझे कहीं नहीं मिलता था. बाकी सब जगह जहां मैं गई, सी फर्स्ट जॉब वाज फ्रॉम गुजरात स्टील ट्यूब्स और द बेस्ट कंपनी इन अहमदाबाद व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, राइट. लेकिन वहां से मुझे जो आईपीसीएल में एंट्री मिली, वहां पे मार्क्स वेर नॉट इम्पोर्टेंट. वहां पे मेरा जो स्कोर था प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन में था, इसलिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गई. ग्रेजुएशन के फर्स्ट क्लास के कारण शॉर्टलिस्ट हो गई. वो लोग 10th और 12th नहीं देखते थे, ठीक है. तो ग्रेजुएशन के कारण मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और मैंने फिर सब किया. पर एट द सेम टाइम पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में परसेंटेज, आप मेरे पास 10 लोग हैं, आप ही बताओ गुरप्रीत, 10 लोग हैं जिनके पास 9 of them has all the 70% plus, the other one is only 55 or 60%. ऑटोमेटिकली, और मुझे सिर्फ 6 को लेना है. isn't it obvious automatic? Yeah. मेरे टाइम में कंपटीशन कम होते थे, अभी कंपटीशन ज्यादा है. having said that having said that your commitment and your passion will give you the result. मेरा इतना मान. वन मोर क्वेश्चन. सो आप कह रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ो एंड ऑल दैट स्टफ. जिनके नंबर नहीं आते, समहाउ कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लाइक लेट्स सपोज आज की डेट में कैट ही एग्जाम है, 98 99 यू गेट द बेस्ट, रेस्ट इज लाइक कि नीचे नीचे आते जाओ. तो अगर किसी के 75 या 80 आ गए तो वो क्या करे? वही है जो उनके पास अभी क्या क्या करना है. सी दिस इज वेरी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आंसर टू क्वेश्चन टू आंसर. देखो, मैं भी तो चाहती थी कि मैं आईआईएम अहमदाबाद में, आईआईएम बैंगलोर या कलकत्ता में पढ़ूं, नहीं हुआ. तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो मुझे मिला मैंने लिया. आपको भी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो, फर्क ये होता है कि अगर आईएम वाले यहाँ स्टार्ट करते हैं तो आपको, और आप यहाँ स्टार्ट करते हो तो आपको नंबर ऑफ इयर्स लगते हैं यहाँ पहुंचने में. ऐसा नहीं है कि आप वहां नहीं पहुंच सकते हो. अगर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एचएसबीसी बन सकती हूँ तो बन सकता है कोई. आफ्टर 14 इयर्स इन कॉर्पोरेट आई वाज वेरी वेलकम एट एचएसबीसी. 3 साल के बाद द थिंग्स चेंज इन सच अ मैनर कि अब वहां पे भी क्या था, हम 6 लोग थे, 6 में से उनको सिर्फ 4 चाहिए थे. अब 4 को चाहिए थे तो जो लोग उनके साथ 10 साल से हैं, they will always get priority over someone who is there for 3 years. So किसकी लाइफ वो डिफिकल्ट करेंगे, क्योंकि एट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 6 people, all of them are more or less 19-20. तो अब कैसे सिलेक्शन होगा? अरे मंजू 3 साल से ही है, रंजन 10 साल से है, रंजन ने ज्वाइन ही किया है एचएसबीसी में. सो मंजू और रंजन में किसको चूज करना है? रंजन को चूज करना है. मेरा हार्ट बर्न कितना भी हो, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि उनकी चॉइस जो थी वो गलत नहीं थी. इफ दे मेड माय लाइफ मिजरेबल वाज बिकॉज दे हैड टू, देयर वाज अ रिडक्शन इन फोर्स. तो देखो, एंड समटाइम्स थिंग्स, एक बात समझ लेना चाहिए हमेशा कि थिंग्स हैपन फॉर गुड. ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर आपका वहां पे नहीं हुआ है तो उसका भी कोई रीजन है. उसके लिए भगवान आपको, मतलब आई एम नाउ सेइंग भगवान, बट at their age between 10 and I was 20 and 30, I thought I made my own destiny. But did I ever achieve what I wanted to? I never achieved what I wanted to. It's just that it's like digital dilemma, right? Digital dilemma is like you are at a point where there are two things. You choose this way or this way. वो आपको डिफाइन करना है. अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पहुंचोगे, और आपने ये किया, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. पर वो जो जो होता है वो बहुत सारे सकम. सबने मुझे बोला आपने एचएसबीसी छोड़ा क्यों? मैंने कहा 1 साल वो मुझे जॉब का देते, उसके बाद मुझे सी देते और बोलते नेक्स्ट ईयर आप जाओगे. 2 साल वो मुझे बेयर करते, उससे कोई फायदा नहीं था. मुझे रोज रोज का उनका इंसल्ट नहीं बेयर करना था. तो दैट्स माय कॉल. But everybody said you should have waited till the time you found alternative job.
पर अगर मैं उसमें ही रहती तो शायद मैं ये नहीं करती होती आज। तब मैं शायद आईआईटी दिल्ली में प्राउड वॉक इन नहीं कर रही होती कि भाई एट 45 आई हैव कम हियर टू स्टडी अगेन। तब मैं लोगों, अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब एक स्टूडेंट मुझे, when the students, एक क्या many students they write to me after completion of courses कि मैम आपके साथ ये सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ सीखा, gives me pleasure। तो वो मुझे, शायद वो प्लेजर मुझे, और वहां पे मेरे को फिर भी, यू आर ऑलवेज इन द रैट रेस, कॉर्पोरेट इज ऑलवेज अ रैट रेस। Let's be honest about it, there is no smooth way up। You have to be street smart, you have to be intelligent, you have to be delivering, you have to be hardworking, you have to be passionate, and having said done everything, still you may not get your dues। उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो 2030 में मैं सिर्फ आज की एज ग्रुप में मैं बोलूंगी कि अपनी टाइम को डिवाइड करो, पूरे टाइम मोबाइल पे और लैपटॉप पे नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे मम्मियाँ बोलती हैं कि पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हो, फोन बंद कर दो। नो, यू नीड टू डिवाइड योर टाइम एंड यू नीड टू डेवलप अ थिंग। आप अभी भले ही 2 बजे रात तक काम करते हो, 11 बजे तक सोते हो, सुबह में उठते हो, ये करते हो, पर एक बार आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको फोर्सफुली वो साइकिल रिवर्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एटलीस्ट अभी से तैयार कर लो और प्रायोरिटीज डिफाइन करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न टू टेक सेटबैक्स इन इट्स स्ट्राइड। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी, मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं ये पढ़ती हूँ कि उनका मार्क्स नहीं आया, उसने सुसाइड कर लिया, उसका वो नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। आई फील क्या मतलब, क्यों? द लाइफ इज प्रेशियस, लर्न टू टेक सेटबैक्स। सेटबैक लाइफ में आपके हर स्टेप में मिलेगा, आपको हर स्टेप में लगेगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, आपको फाइटर होना है। फाइट इट आउट, एंड फाइट इट आउट मतलब बॉक्सिंग करके नहीं, अपना अपने आप को प्रूव करके, अपने आप को। एंड बिलीव मी, after some time you will get your dues। there are times when there are good times, there are times when there are bad times, but अगर आप ऑनेस्ट हो और पूरी तरह मेहनत कर रहे हो, आपको आपका ड्यूज मिलेगा। टाइम है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। I belong to two sides of family। मेरे नाना जी कर्म में विश्वास रखते थे, तो वो हमेशा बोलते थे, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुम अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना लो कि भगवान तुमसे आके पूछे कि तुमको क्या चाहिए और तुमको वो दे। एंड माय ग्रैंडपा वाज द अदर साइड, बट नॉट दैट ही डिड नॉट से कर्म नहीं करो, बोलते थे हानि लाभ जीवन मरण। हानि मतलब तुम्हारा नुकसान, लाभ प्रॉफिट, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। यहाँ विधि का मतलब हर चीज, ये तुम्हारी रेखाएं नहीं होती हैं, विधि मतलब कर्म, विधि मतलब भाग्य। सो कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन होता है। ये बचपन से मैं सीखती आई हूँ। मैं ज्यादातर खुदी को कर बुलंद में विश्वास रखती हूँ, लेकिन जहां सेटबैक होता है वहां सोचती हूँ चलो गॉड डिड नॉट वांट इट। बट डोंट लेट योरसेल्फ बी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सेटबैक से दुखी हो जाते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि वो सेटबैक ले नहीं पाते, नहीं हुआ तो दुखी हो गए, लोग क्या कहेंगे। बिलीव मी, लोग क्या कहेंगे ये जिंदगी से अपनी निकाल दोगे जिस दिन, उस दिन सबसे खुश रहोगे। Peer pressure is the worst pressure this generation is undergoing, is my problem, I believe so। एंड पीयर प्रेशर ज्यादा इसलिए है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसने क्या ड्रेस पहना, उसने क्या बोला, उसने क्या पोस्ट किया, उसने, अरे क्या फर्क पड़ता है, किसने क्या बोला उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है।
चिपक गया क्या? तुम किसी ने बोल दिया अरे तुम गंवार हो, तो भाई समझ लो तुम गंवार हो, मैं क्या हूं मैं जानती हूँ। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, don't let what others say affect you. The day you stop that, letting others affect you, you will be your boss and you will do the right things. किसी ने क्या बोला उसे क्या लेना देना है यार। जिंदगी में लोग तुमको, इस दुनिया में लोग कभी भी, मतलब कोई तुमको बहुत चढ़ा रहा है तब भी सोचो कि प्रॉब्लम क्या है। इस कुछ चढ़ा रहा है मतलब उसको तुमसे कुछ चाहिए। There are no free lunches in this world. Don't let anything impact you. Your decision. Your decision has to be yours. लेट्स टेक सम कमेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने काफी सारे कमेंट्स किए हैं। सो आपको अचीवर्स राउंड के बारे में कुछ पता है? जो जीएम बहुत सारे उसके ऊपर कमेंट्स हैं। या जिम में अचीवर्स राउंड होता है फॉर मेन पीजीपी तो फ्लैगशिप प्रोग्राम। उसकी मतलब कब स्टार्ट होगा वो? सबसे ज्यादा तो यही आ रहा है। उसका फॉर्म तो भर दिया गया होगा एंड आई फॉर्म तो थिंक कुछ है। बाय डिसम्बर एंड or something, sometimes in December end is over, it's ओके, already जनवरी 10। late, so probably by Jan end or something. ओके So एंड achieve around, see, I am not in the admission team, so when it will ओके be, I will not be able to answer. You have to ask somebody who's in the admission team. Oh, so anyone who wants to ask any question, please comment and make sure achievers round का नहीं पता है मैम को ज्यादा। ठीक है, so वो क्वेश्चन छोड़ के आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Let me just- Achievers round, I can tell you what happens in achievers round. When I cannot. What Okay, yeah. happens? I What have done happens? two achievers rounds. Okay, what happens? What happens is, like, if you think, if they think that you are you have achieved something, like you have played nationally or you have done something different, so आपका marks भी बहुत अच्छा है throughout, so you are supposed to be an achiever. So क्या होता है कि आपको बुलाते हैं straight away interview के लिए। वो इंटरव्यू जो कि रेगुलर लोगों के लिए बाद में होता है, मतलब जो अचीवर राउंड में सिलेक्ट नहीं होते उनके लिए जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो बाद में होते हैं, आपके लिए पहले हो जाते हैं। कैट जैट वगैरह नहीं होता, उसके पहले ही हो जाते हैं। उसके बाद if I feel, and it happens in the same day, you meet a panel, there is a group discussion, there are where a topic is given, you are discussed, then you come and meet the panel, and if the panel recommends, then you are shortlisted for the final round. तो वो फिर मेन लोग बैठते, and in this, at the end of the day, you will know whether you are selected or not selected. So if you are selected as an achiever round, then you will not be called for the regular interview. So then your option of again appearing later. Now, with the achiever round, you have to accept or reject the offer. If you have accepted the offer, then it's okay. Then if you have rejected the offer, then it's not that then आपको दोबारा बुलाएंगे। Okay, And बहुत ज़्यादा nitty-gritty मुझे उसकी नहीं पता है, but the thing is कि I know that once you are called in achiever round, you will not be called in the regular rounds. all right. Okay, place point of view से BIFS segment as it newly started. So पैसे के हिसाब से कैसा है? Till the time people are placed, I can't really comment on it. We are still doing summers, and this being the problem that has happened with BIFS is we have started a new course, although teachers are the same, but it is during COVID times, everything is virtual. The policy of 5 months summer internship. Now, many of the companies do not have this policy. They have the policy of 2 months internship. So that's another challenge that BF is facing, but we are trying to do, and we will achieve the summers. And final placement, we do expect it to be good because the kind of curriculum and the kind of knowledge that, so financial sector companies should be picking up. Okay. And another question, engineers के लिए finance is good or what? If you're in, like if there is engineer graduate BTech, अब वो BIFS में आए कि नहीं आए? What? पता नहीं, मैं तो BSc हूँ, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, एंड आई एम डूइंग वेल इन फाइनेंस। मेरा मानना ये है कि फाइनेंस इज नथिंग बट कॉमन सेंस, लॉजिक। इफ यू आर मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग, मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को, आई फाइंड इंजीनियर्स थिंकिंग कि वो उनको समझ में नहीं आएगा, कॉमर्स वाले को समझ में आएगा।
अकाउंट्स इज द ओनली एरिया जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंजीनियर्स को. अदरवाइज इफ यू लुक अराउंड एंड ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंपनीज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लाइक फॉर इंस्टेंस टाटा मोटर्स, उनके जो वेरियस प्रोजेक्ट के हेड्स होते थे ना, वो यूजुअली इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड के होते थे. उनकी टीम में फाइनेंस पर्सन होना चाहिए और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते थे, क्योंकि वो उनको प्रोजेक्ट असेसमेंट करना होता था, प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस करने होते थे. तो फाइनेंस पर्सन अगर करके दे रहा है तो भी तुमको पता होना चाहिए, तभी तो तुमको वो बेवकूफ नहीं बनाएगा ना. यू विल हैव टू नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस. सो मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ एरिया वेर यू लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और इंजीनियर है तो मार्केटिंग क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? Right. कंप्यूटर इंजीनियर हो तो सो मच मोर द रीजन मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? तो सॉफ्टवेयर में जाओ. सो इट्स नॉट दैट. मेंटल मेंटली कभी ये मत सोचो कि ये मैं, जिस दिन तुमने ये सोचा कि मैं इंजीनियर हूं और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने ये सोचा होता था कि 20-19 साल की कॉर्पोरेट के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, तो मैं तो जिंदगी में फिर तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल ही करती रह जाती ना. True. कभी भी ये चीज सोचने का कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा. द मोमेंट देर इज अ मेंटल ब्लॉक, एंड इंजीनियर्स आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉक. And on the contrary, I found that engineers sometimes perform better than the commerce graduates because um, their this thing mathematical ability is much stronger. And in finance, mathematics is what you play Okay. around with. One more question. Do companies give chance to freshers in finance? Obviously, they do. That is why we have the BIFS vertical. They will join as freshers only, right? Oh, fresher means graduates. Yeah, yeah. Just graduates. What happens in graduates and with the experience in anyone, any place? Graduates will always be at a, I mean, if you have good experience with a good corporate, आपका मान लीजिए 3 साल का या 2 साल का एक अच्छे कॉर्पोरेट के साथ एक्सपीरियंस है, फिर आपने एमबीए किया है, तो आप थोड़े हायर लेवल पे जाओगे. फ्रेशर जो है वो थोड़ा लोअर लेवल पे जाएगा, एट अ ट्रेनी लेवल पे जाएंगे. सो देयर कैन बी डिफरेंस इन रेम्यूनरेशन एंड कैन बी डिफरेंस इन वर्क प्रोफाइल, पर नहीं लेते हैं ऐसा कैसे है? हमारे आई थिंक 40 to 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट ग्रेजुएट्स. Okay. One question from my side is MBA करनी चाहिए after like graduation के just बाद ही या फिर experience के बाद? देखो, ओवरसीज तो ऑल गुड फर्म्स मैंडेट कि आप कम से कम 4 साल का 4 to 5 years of experience के बाद आप आइए. There are two reasons. One, it's very expensive, so you earn your this thing, and the thought process is that also. Plus, जब तुम काम कर चुके होते हो तो जो पढ़ाया जाता है उसको ज्यादा समझ सकते हो. Relatable रहता है. Relatively, you will be able to better understand. So that's the reason they feel कि क्या कि मतलब if you have worked, but the fact is कि you, for this you should read a very good book, Snapshot from Health by Okay. Peter Robinson. Peter Robinson was a speech writer for Reagan, the president, which means उसका पूरा आर्ट्स का बैकग्राउंड था, and then he joined Stanford. Okay, he got selected in Stanford. उसने अपनी 2 साल की जर्नी स्नैपशॉट फ्रॉम हेल वो लिखी है, उसको पढ़ो. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, या इनएक्सपीरियंस हो तो बहुत बुरा करोगे, ऐसा नहीं है. Having said that, experience adds value, and after MBA, the companies also give you more weightage, for Okay. sure. बट ये भी नहीं है कि तुम फ्रेशर्स हो तो तुम कर नहीं सकते हो, और फ्रेशर्स हो तो तुम एकदम बॉटम पे शुरू करोगे पर प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है. Oh. All right. That's it. I hope बाकी तो accepting calls on like
कट ऑफ के बारे में पूछना है, आई डोंट नो, कट ऑफ तो पता ही चलती है. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच मैम, एंड आई होप सबने एंजॉय किया वो सेशन, एंड थैंक यू फॉर अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टुडे. बहुत सारा मोटिवेशन मिला, एंड या दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि पढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. एंड बहुत सारे लीडर्स, हाँ मैंने देखा जिनसे बात करते तो वो यही कहते हैं कि नंबर इतने जरूरी नहीं होते, बट यू आर द फर्स्ट वन जो कह रहे हैं कि नंबर जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स बस लवली. मतलब मेरे अकॉर्डिंग जरूरी है, पर उसके लिए अपनी लाइफ को पूरा वो नहीं, तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए, तुमको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुमको सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ना है, पर थिंग इज ओवरऑल आप पर्सनालिटी. अभी भी पढ़ते हो? यू स्टिल रीड बुक्स, नॉवेल्स, यू नो? आपको पता नहीं है, अभी तो पढ़ने का इतना होता है, बिकॉज रिसर्च पेपर, आजकल बुक्स नहीं पढ़ पाती हूँ, रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ, पढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ. That's पढ़ना इन एकेडमिक्स, पढ़ना इज अ मस्ट. But yes, once I am kind of stable in academics, then I'll again, I can suggest very, very books one must read. ओके. कोई 3 बुक्स आप सजेस्ट करोगे अभी एमबीए वालों के लिए, जो एमबीए करने जा रहे हैं उनके लिए ये तो क्या? मैंने बोला ना, स्नैपशॉट फ्रॉम हेल बाय पीटर रॉबिन्सन वो तो एक होगी, will give दो you दो good और, view what you are going to be informed. टू मोर बुक्स. See, I'm not the person who gives studies motivational book. So I study books with which give me some kind of rigor or anything. Mm, what else? There is a book, Papillon, which I loved. It is a true story. It talks about a prisoner who 10 times, every time he breaks the prison, gets caught, and gets put in a worse situation. But how he manages, never gives up, and finally he manages to escape. And Papillon by that name, it's a French name kind of. It's a Papillon, ओके. pronounced as Papillon. It is Papillon, many people will pronounce, but that's a book. Then there are lots of other books one can. Ajkal Sapiens karke, but I think I tried. सेपियंस, I mean, I read any book that is. One good book in the motivational thing is Who Moved My Cheese? छोटी सी book है. Who Moved My Cheese? I don't remember the name of the author. That's very good. Who Moved My Cheese, and the the man who sold his Ferrari, the ओके. millionaire or मॉन्क, billionaire, हाँ, द the मॉन्क हू monk सोल्ड who हिज sold Ferrari. his Ferrari. Those two are offbeat books. I normally prefer more of that kind. Mm. All right. So thank you very much, ma'am, for this session and your time. Thank you Thank so you. much. And hit the like button. All of you, जितने भी लोग देख रहे हैं, enjoy किया होगा तो जरूर से hit the like button. If you have any suggestions, please comment down below and share this video with all your friends. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much.